All right, let's go over this very quickly. So what are the problems जो आपको फेस कर रहे होते हैं नॉन जेनेरिक कलेक्शंस के पास? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हैश टेबल्स जो होते हैं दे स्टोर इट्स की एंड इट्स डेटा एज ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। तो सिर्फ वैल्यू भी स्टोर नहीं हो रही, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट भी स्टोर नहीं हो रहा, लेकिन रेफरेंसेस टूवर्ड्स द स्ट्रिंग एंड द इंटीजर इज़ ऑल्सो बीइंग स्टोर्ड। ठीक है, तो ये काफ़ी इनएफिशिएंट होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग के ओवरहेड आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम उस पर आने की कोशिश करते हैं, जेनेरिक्स के पास आने की कोशिश करते हैं। और ये भी होता है कि इस अनबॉक्सिंग या बॉक्सिंग के अंदर यू कैन चेक आउट दी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो जिसके अंदर इट्स बीइंग डिस्क्राइब कि वो चीज़ होती क्या है। बट एक और चीज़ जो हमारे पास मसला आती है वो आती है इनवैलिड कास्ट ऑपरेशन की। तो इनवैलिड कास्ट ऑपरेशन से बचने के लिए हम अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं, विच बेसिकली मीन्स के क्या कहते हैं, अगर हम कोई चीज़ रिट्रीव कर रहे हैं अपने हैश टेबल से, सो वो फिर हमें नहीं पता कि वो कौन से डेटा टाइप की होती है। कभी कभार हम डेटा टाइप्स भी शायद बहुत बड़ा कोड है और उसमें हम ट्रैक नहीं रख सकते कि कौन सा डेटा टाइप यूज़ हो रहा है, सो वहाँ पे मसला आता है। सेकेंडली अगेन शायद अगर कोई चीज़ डाल रहे हों, फिर उस केस के अंदर इनवैलिड कास्ट ऑपरेशन आएगी और उसके अंदर हम किसी तरीके से उसको लाइक बॉक्सिंग से या दूसरे मेथड से शायद सॉल्व नहीं कर सकते उसको। तो उसके लिए और ये सारी की सारी अनोइंग एक्सेप्शंस से हटने के लिए, मेकिंग आवर कोड मोर एफिशिएंट, वी गो फॉर generics. Now, how do you use generics? You have to use the library of system.collections.generic. Earlier हम सिर्फ systems.collections यूज़ कर रहे थे for the non-generic versions of your code. So the non-generic versions का मतलब ये है कि जो हमने अभी प्रीवियसली स्टैक और क्यू डिस्कस किया था, वी वर डिस्कसिंग इस नॉन जेनेरिक वर्जन। बट जब आप यहाँ पे एक टेम्पलेट टी का क्लास का वर्ड टी लिख देंगे और उसको सराउंड कर देंगे इन ब्रैकेट्स, सॉरी इन एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ, तो फिर ये जेनेरिक क्लास बन जाएगी। सो you're going to be using system.collections.generic to use the generic classes for your data structures. Let me just read through and see if I have ignored any point. Yes, so invalid cast operation जो होती है, it is thrown at the execution time and is you're basically coming to your generics because you want to be safe. You want your code to be compile time safe when you're working with it. Compile time safe type safety के बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद मैं बात करता हूँ। And yeah, that's it. So let's talk about this thing which is compile time type safety. ठीक है, compile time type safety क्या होती है कि हमारे पास जब जेनेरिक्स क्रिएट हो रहे होते हैं ना, तो हम उसको रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ करना चाह रहे होते हैं। वी आर ट्राइंग टू यूज़ इट फॉर डिफरेंट टाइप्स। सो यू विल फाइंड दैट जगह जगह पे डेटा टाइप्स लिखा हुआ है, बट द रीज़न एज टू वाई वी आर सेइंग टाइप्स इज़ बिकॉज योर इट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर स्ट्रिंग। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ क्लास, like class का object भी आप pass कर सकते हैं. So for example, if I want to pass an object in my stack, then I would be writing the name of the class inside this T. So इसलिए the word types is used. Now compile time type safety ये चीज़ होती है कि जब आपका फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एग्ज़ाम्पल के साथ लेके चलते हैं कि आपने एक एरे लिया, ठीक है, और उस एरे को आपको किसी तरीके से सॉर्ट करना है। तो उस सॉर्टिंग के लिए हम एक मेथड बना रहे हैं एंड वी वांट दैट मेथड टू बी जेनेरिक। सो वी आर क्रिएटिंग अ जेनेरिक मेथड टू सॉर्ट एन एरे ऑफ एनी टाइप, राइट, एनी टाइप, एनी डेटा टाइप। सो फॉर दैट वी नीड टू इंश्योर कि कंपाइल टाइम पे जब वो कंपाइल कर रहा है कोड, तो जो एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सेम टाइप के हों, ठीक है, सेम डेटा टाइप के हों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ इंटीजर एक चीज़ स्ट्रिंग, दैट शुडंट हैपन। सारी चीज़ें एक ही टाइप की होनी चाहिए। सो फॉर दिस आपकी एक चीज़ कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर परफॉर्म्स टाइप चेकिंग टू इंश्योर दैट द एरे हैज़ ओनली द एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइप सेफ्टी. Now, so again, this reduces the runtime cost of your boxing and unboxing and casting के सारे exceptions which we were discussing over here कि जो ये जो थ्रो होते हैं execution time पे, तो यहीं पे ये बात हुई कि रन टाइम पर इनको अवॉइड करने के लिए हम कर रहे हैं. Now अगर आपको publicly
if you want to use this, if you want to create a generic class, so again class का syntax same है, class generic list public add now. यहाँ पर just note that your entire code is same, बस फ़र्क यहाँ पे I think method, wait let me just confirm this. Yes, there is a small issue, and the small issue was that there should have been a T over here. My bad, sorry. So यहाँ पे हमारे पास generic T है कि ये इस टाइप से belong कर रहा है, तो हमने ये कर दिया public at T input, ठीक है. ये हमारा एक method है जिसके अंदर ये T वेरिएबल की चीज़ें आ रही होंगी, एंड देन वी हैव जेनेरिक लिस्ट. फॉर एग्जांपल हम जेनेरिक लिस्ट बना रहे हैं एंड वी से कि ये स्ट्रिंग है, सो G1 इक्वल्स टू न्यू जेनेरिक लिस्ट, एंड यू आर अगेन यहाँ पर भी दिस शुड हैव बीन न्यू जेनेरिक list of type string and then call its constructor. Yeah, so for method का भी it's very similar. You have the method's name, so public static void जैसे हम methods बनाते हैं, display array, and then उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा T. So again your normal syntax, then the T, normal syntax, then the T, and then within this which type of variables are you using, ये वाली चीज़ भी इसी टाइप की होनी चाहिए. So again ये भी चीज़ इसी टाइप की होगी, and then we have input array, and then यहाँ पे बस हम iterate कर रहे हैं, and the way how you iterate template based or generic based variables is by saying for each T element. So this is one thing, T element in input array, and if you want to access the element you will be using the element word. So let's take a look at a bit more advanced example in which we are trying to calculate the max, and we do not know which type of object is going to be passed over here. It can be an object, it can be a class, it can be a string, it can be int, it can be anything. So for that we are going to, now we have changed the return type from void, so over here it was void, to some generic template T. तो ये T चीज़ रिटर्न हो रही होगी, ठीक है. ये जो मैक्स रिटर्न हो रहा है दिस विल बी ऑफ दैट T वेरिएबल विच इज़ जेनेरिक. Then we have max, this is the function name, then again just angular brackets T, and then T, this is you're passing an input array. So again these two things should be the same thing, and another thing that we're doing is we are also adding an interface called iComparable. So we have written where T colon iComparable T, and then the angular brackets. So what this is doing is that this is allowing you to have the functionality to compare your elements. So let's assume यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने T max किया हुआ है, and T max equals to input array the 0th element. तो ये कोई सा भी जो भी 0th element आ रहा है उसमें store हो गया. Then you're checking, sorry you're not checking, you're basically taking each of the elements in the input array. So T element in input array, जो array है उसमें हर एक element के अंदर आप iterate कर रहे हैं, and then for each of the element, ठीक है, you are comparing to maximum. This compare to is coming from this interface. So this is basically allowing you to use this thing with your template T class. So if element.compare to max is greater than 0, then max equals to element, and then you're returning the max. So that's how you're using it. So let's talk about generic collection classes. ठीक है, generic collection classes different type की होती हैं. list होती है, stack होती है, queue होती है, linked list होती है, sorted list होती है. So list, you can think of list as a single all right, so I was doing a little bit of research as to finding the difference between array list, linked list, sorted list, and sorted dictionary. So I have this very nice table which is telling you that array list is non-generic as we discussed earlier, and these are all the generic functions. The sorted list is also non-generic. So there is also this is also another error, so I'll just remove that from there. And then we have sorted dictionary as generic, and then these are yes, 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 no, yes, yes, and so on and so forth. So the difference in between these array list
list, linked list, sorted list, and sorted dictionary um, comes with the fact that array list and sorted list are, these two are now legacy, which means these should not be used anymore. These used to be used for .NET version 2.0. Unfortunately, the one that the course that I'm following right now is in fact using this legacy based code, which is the reason why I was discussing array list and all of the other data structures, right? So if you're using array list and sorted list, it is recommended that you migrate to using in the case of array list, you should migrate to using list, and if you're using sorted list, you should then migrate to using sorted dictionary. So the difference between these three, which is list, linked list, and sorted dictionary, comes from the fact that list is used as an access as an index, linked list is used as a node, and sorted dictionary is used as a key. So you can think of list as similar to array list. Linked list is again the same thing as you have studied in C++ or before, how a linked list works, which is with respect to the node. And the sorted dictionary is like the generic version of the hash table, which we'll be discussing. So coming back as to how you're going to use a list, so you write list and then the t, which is going to be the variable or the data type, and then you're going to say list, the name of your list equals to new list, and you're good to go. Did we do this one right? And I did this one incorrect as well. I apologize for this. So this should be list string this thing. Not my lucky day. I might have to remake this video again, I guess. Anyways, so you're going to do dot add, which is again very similar to the array list, and then the count property, which is available to every single data structures that we've seen up till now, and then remove, clear, and sort. For the sort, you need to have this iComparable, which means you need to add that interface to your method or to your class if you want to. Okay, so let's take a look at what is sorted dictionary. So the sorted dictionary is basically a key value pair. Hash table is one way to implement a dictionary, but if you're using a sorted dictionary, that means that you're using BST, which means you're using binary search tree inside this sorted dictionary, which basically means that your searching time is very fast, and it's now O of log n, which is better than linear time, which is O of n. So how are you going to use iComparable in your class, right? Or how do you add iComparable to a class? So we were looking at a method which was over here, but how do we add it to a class? So it's very simple. You just write public class person colon iComparable and the object that you want to add, and then you do public string. This is the property, sorry, these are the members or the variables that I have defined for this class, which is going to be name, so make a getter setter, and then I have created this method which is called compare name. So all I have to do is just insert an object over here, and its name is going to be compared, and this compared to comes from the fact that I have imported this iComparable. So what happens if a key doesn't exist, right? So if there's a key which doesn't exist, and I'm trying to return something from that, if it's a hash table, it's going to return null. Otherwise, if it's a sorted dictionary, then it would return key not found exception. And yes, so let's move on forward with the linked list. Linked list is very similar. This is going to be a double linked list, which means it can go in both directions, in the forward direction and also in the backward direction, which is the reason why in the properties you have the next and the previous pointer available for the current node. You can also use dot value to access the value of the current node, and dot first to get the address or the pointer to the first node. So for the methods, you can use add last, add first, add. These are the methods to like add a node at the first or at the end, and then you can remove it, or you can find a particular node if you want. Okay,
So let's discuss the last topic for this video, which is going to be synchronization. So synchronization basically means that you need to have something synchronized, right? So इसका मतलब ये है कि आपके पास जो थ्रेड्स होते हैं ना, थ्रेड्स के ना कभी कभार आपको लॉकिंग करनी पड़ती है, कभी कभार आपको मेक श्योर करने होते हैं कि थ्रेड्स सिंक्रोनाइज्ड हैं, कि ताकि वो आपस में एक कॉमन चीज़ पर चीज़ों को लाइक ओवरराइड ना कर सकें. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एरे बना रहा हूँ और थ्रेड्स बेसिकली क्या करते हैं, दे आर लाइट वेट एंड दे आर लाइक स्प्लिटिंग अप द टास्क. सो एक थ्रेड को मैं बोलता हूँ कि पहले के दो करो, दूसरे मतलब थ्रेड्स को मैं ऐसे स्प्लिट करता हूँ कि एक थ्रेड आधा काम करेगा और दूसरा थ्रेड बाकी का आधा काम करेगा. सो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट मोस्ट ऑफ योर नॉन जेनेरिक कलेक्शंस जैसे कि एरे लिस्ट हो गई, या आपके पास कुछ आइटरेटर्स हो गए जैसे इन्यूमरेटर और फॉर ईच हो गया, ठीक है. ये आपके पास ये आपके पास थ्रेड सेफ नहीं होते हैं, यानी कि ये दे आर नॉट सिंक्रोनाइज, दे आर अनसिंक्रोनाइज. एंड सिमिलरली आपके पास जो भी जेनेरिक कलेक्शंस हैं दे आर ऑल्सो अनसिंक्रोनाइज. सो टू मेक देम सिंक्रोनाइज वी आर यूजिंग रैपर्स, ठीक है. एंड रैपर्स क्या करते हैं, हम रैप करते हैं अपने नॉन जेनेरिक कलेक्शंस को, विच क्रिएट्स द रैपर कलेक्शन ऑब्जेक्ट, and then you can use that, which are by default basically synchronized. So the way how we do this is एक method call डालती है एक wrapper object के पास. wrapper object क्या करता है, thread synchronization ऐड करता है. वो thread synchronization फिर पास होती है कॉल, मतलब ये पूरी पास होती है कॉल to your wrapper collection object, and then you're safe to use it. So array list क्या है, पहले initially not save है, तो आपके पास क्या आया, new array list. ये हमने बस नॉन जेनेरिक लिस्ट बनाई हुई है. टू मेक दिस सिंक्रोनाइज ऑल वी हैव टू डू इज क्रिएट अ न्यू लिस्ट एंड देन डू new array list. Again, not my day. This should have been synchronized, and then I have to add not safe. Okay, so with that, what we did was we said new array list dot synchronize and then add in your last variable which you were using. So with that, अब ये चीज़ synchronize हो गई है, and then you can use it safely. Also, there could be some errors which you could get if you are not using this in the correct way. And the way मतलब अगर वो not safe है तो फिर आपके पास शायद invalid operation exception भी आ सकती है. सो थ्रेड्स को आपस में कोलाइड होने से, कोलिजन होने से बचाने के लिए यू आर यूजिंग द वर्ड लॉक. यू विल सी दिस आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई डू threading in C#.